history of animation and how do we define animation? Well, so first of all, hi everyone. As she said, I am Sangram Borse. Been in this industry for almost 20 years now, since 2002. And for the last 6 years, I have had my own animation studio in Nasik and in Bombay. So, to quickly dive into the topic, what is animation? To say it simply, sequential images put together to create a motion is called animation. So it is as simple as if you have this pen, and if you take pictures of this pen from like one picture, two picture, three picture, four picture, five, and then we play it in a sequence, this is the movement, and that is called animation. So animation basically can be done with anything that you find around me. It can be your phone, it can be your pen. You can just take pictures from your phone of your chair moving and then play them together. And it's almost like a flip book that we used to draw in school, like a small man running or dying or whatever. So that is animation. And the second part was a brief history of animation. So, Yeah. we have Ritvi with us. Hi. So, as far as the history of animation, Indian animation started all the way back in 1956 when a Hollywood director, a Hollywood animation artist, was asked to come to India by the films division to work on a feature film. Now, Claire Weeks was his name, and he was actually born in Missouri or Mysore, and then he moved to California doing his own thing over there. And he came here, and they worked on the very first animated feature film called The Banyan Deer. Now, how many times have you if you guys have seen Disney movies? There was a movie called Bambi, Yeah. which was a Yes, yes. very The amazing famous movie by movie. Disney. Mm. Now, Claire Weeks was an amazing artist on that movie. Unfortunately, what happened was his influence of Bambi came into the Banyan Deer, and it ended up looking the same. So the movie might not have gotten as much exposure as it should have, but it opened doors for India. So what happened was, after that, the three pioneers of Indian animation, which is Ram Mohan, Bhimsen Khurana, and Anand Pai. Now Ram Mohan was the head of the commercial side, where he made amazing films like Ramayana with Indo-Japanese production. Bhimsen sir made amazing short films that won international prizes all over the world. You guys can check out Ekta Mein Anekta by Bhimsen, and like Ek Chidiya, Anek Chidiya, like we Uh-huh. used to keep hearing it Yes, on right. Doordarshan a lot. Yes, That yes. was done by Bhimsen sir, and Anand Pai was the CEO and the editor of Amar Chitra Katha, one of the oldest Yeah. comic franchise in India. So it all started off with these three guys coming together doing an Indo-Japanese production. Then slowly we came into Simpu Sardar, which was done by Vaibhav Studios in India, which was a very well-known series that was being played on Channel V. We take one step ahead when we actually witnessed the very first Indian superhero, Chota superhero, which was Chota Bheem. I think Okay. we are all Yes. familiar with Chota Bheem. My son is And very much, big fan of Chota Bhim. a big fan of Chota Bheem. I mean, it is probably the greatest success story in India, Mm. where it was not only the first Chota superhero in India, but also it was one of the best shows that was being played on Netflix as well. That was Oh. going from India. Mm. And after Chota Bheem was the introduction of Kirit sir, which is Bhimsen Khurana's son. He made the very first live action animation mixed feature film called Toon Mm. Poon the Superhero. Okay. And as on, we had couple other milestones in between, but one of the most important milestone that happened in Indian industry or Indian animation industry was in 2018 was the international integration. Oh. Now, my last point in history of Indian animation was the tremendous and the significant boost that Indian animation got because of the international integration. And international integration is
Netflix, Hotstar, Hulu, Hmm. Prime Videos. The moment these things became international, the demand for animation just boosted. So Hmm. right now we are actually, despite of the amazing history of animation and the entire ups and downs that we went through in our entire history, now we are at a point in animation where it is the most amazing profession or the most uh, significant profession in India right now. Wow. That the history is wonderful, Sangram, and thank you Thank you. so much for sharing it with us. So मेरा अगला question है कि why one should think animation as a promising career field when we have lots of fields with us, right? और majority of the students who come to us वो हमेशा एक ही माइंडसेट से आते हैं कि either they want to go for engineering, either they want to go for medical or CA, ICWA, or these conventional career fields. But then, why one should think that animation is a promising career field? Be- because एनिमेशन एक ऐसा एकलौता फील्ड है जो हर जगह पे यूज होता है. I mean, I do understand that animation might not look as one of the most amazing fields, and you cannot really blame your parents for pushing you into engineering, architecture, and all these things. Now, tell me, when was the last time you guys actually watched a movie without watching the trailer? Or when was the Hmm. last time you actually ordered anything from Amazon without uh, seeing the reviews? Hmm. एक बार भी नहीं ना. Then how can you expect your parents to force you into animation when compared to a standard professions इसके ज़्यादा reviews ही नहीं है. Right, right. At the end of the day, it is not some Right. random movie कि अगर अच्छी नहीं लगी तो चलो उठ के आ जाते हैं या गंदा product जो return कर दिया. This is your life, guys. Right. So thinking from a parental mindset, all they are caring about is आपकी life set होनी चाहिए, just like any other parent. But similarly, अभी एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं कि एनिमेशन इज एवरीवेयर. Hmm. So why everywhere? What I mean is from a WhatsApp GIF, हम जो गुड मॉर्निंग का एक छोटा सा एनिमेशन जिफ सेंड करते हैं टू न्यूज में जो स्क्रोल्स आते हैं या कुछ एनिमेशन आते हैं Hmm. टू इन्फिनिटी वॉर में थैनोस. Right. आप हर जगह पे देखो, जहां भी देखो 24/7 यू आर सराउंडेड बाय एनिमेशन. So why isn't animation a relevant career? ये करने के लिए jobs चाहिए. I'll give you another amazing example. हम लोग Netflix पे आप सब लोग सीरीज देखते हो, ठीक है? Hmm. एक सीरीज के सेकंड सीजन के लिए हम 1 साल रुकते हैं. हम गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए कुछ 2 साल रुके थे, आई थिंक, या 1 साल रुके Yes. थे. 2 साल. गेम ऑफ 2 साल. गेम ऑफ थ्रोन्स आते ही 99% लोगों ने एक रात में खत्म कर दिया. नाउ गेम ऑफ थ्रोन्स इज ऑल एनिमेशन. ड्रैगन्स तो रियल है नहीं, वो सारे फाइट्स और द ग्रेट वॉल एंड एवरीथिंग वो तो रियल है नहीं. Right. सो इमेजिन करो, इतने सारे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हुलू, हॉटस्टार, कम से कम 15-20 प्लेटफॉर्म्स है. 15-20 प्लेटफॉर्म्स पे 7 बिलियन पीपल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड is actually consuming material at such a high speed. तो कितना ज्यादा बनाना पड़ेगा, Hmm. और इतना बनाने के लिए आर्टिस्ट चाहिए. Right. So Right. if you see, as a student, or as a not as a student, as an artist, or as log coming out of 12th or 11th, it is easier for us to be like, यार animation में जाना है, कुछ अच्छा करना है. But it is equally important for you to convince your parents कि ये important क्यों है. And Hmm. this is the reason for that. और इतनी ज्यादा जब डिमांड होती है तब जॉब्स की कमी होती है नहीं, Hmm. Right. especially in such a big country like India. So I feel we will actually move on to this point Yes. at the end, which is post-COVID animation की क्या situation हुई है. Hmm. But even before COVID, I think in Hmm. the last 2 years, animation has jumped in the top 5 professions that you can get into. Wow, wow. So I think the question में जो आंसर मुझे चाहिए था कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है थोड़ा बहुत आइडिया रहती है, but they are not able to convince their parents that this Yes. is why I want to do
this is why I want to go in this field. So I think आपका ये जो आंसर है वो शायद बहुत हेल्पफुल है कि एनिमेशन में क्यों जाना है. So इसका एक अमेजिंग आंसर मिल गया है. And Yeah. actually, this might cover another question that Yes. we had talked about. One of the main problems in our industry or in India as such is drawing तो बच्चों की चीज है, कार्टून्स तो बच्चों के लिए है. I mean, एनिमेशन इट इज थैनोस यार. थैनोस आधी दुनिया को एक चुटकी में मार देता है, वो बच्चों के लिए नहीं है. Right. But it is important for you guys to show your parents how interested you are. Right. I mean, Right. Exactly. एनिमेशन मैंने खुद ने एनिमेशन में 10 साल पढ़ाई की है. इट इज एज गुड एज बिकमिंग अ डॉक्टर. आपको अगर किसी भी इंडस्ट्री में अच्छा करना है, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट इंडस्ट्री. यू हैव टू बी सीरियस अबाउट एजुकेशन इन दैट इंडस्ट्री. मैंने खुद ने 10 साल पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने 8 साल काम किया है, और उसके बाद भी एवरी मंथ एवरी ईयर मैं कुछ ना कुछ नया ऑनलाइन कोर्सेज सीखते रहता हूँ. राइट. एग्जैक्टली. यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि यार मैं ड्राइंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर ये इसका इम्पोर्टेंस है. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. आई एम नॉट डूइंग ड्राइंग जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है. यानी सिंपल एग्जांपल, आपको स्कूल में हमने डेरिवेटिव सीखा है. लिटरली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज जीरो यूज ऑफ डेरिवेटिव्स. कहीं यूज नहीं करते. कैलकुलेटर से पूरा काम होता है. बट डेरिवेटिव्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारी चीजें दे ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन अ सर्टेन वे, व्हिच इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनिमेशन as it is important for engineering or any other field. So always remember that animation is not your escape from studies. Right. Okay. You have to be good at studies and be interested in this field as a profession and not as a hobby. ये अगर आपके पेरेंट्स को दिखेगा तो फिर वो भी इस चीज को सीरियसली लेंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स ने 2000 में ये चीज सीरियसली ली थी. राइट. आई थिंक ये जो है वो कोई भी अनकन्वेंशनल करियर हो संग्राम, जो कोई भी कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहता है, आई थिंक ही शुड बी कन्विंस्ड विद इन फर्स्ट कि मेरे को ये क्यों करना है, मुझे ये क्यों करना है, एंड देन ओनली ही विल बी एबल टू कन्विंस हिज और हर पेरेंट्स. तो ये किसी भी, या दिस इज ट्रू फॉर एनी फील्ड. सो अगर आपको कुछ अलग करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि you put in that 200% effort for your parents to think यार इसमें कुछ तो होगा कि ये इतना कर रही है, या इतना कर रहा है. Right. तो तो let's move to our another question. So when we say I want to do career in animation, what exactly a student should expect? As now in, this yes please. So yeah, it's a very typical question because they have to answer their parents कि this is what I'm going to do, or these are the steps I'm going to do ahead, like this. So what exactly. student should expect, and both what should a parent should expect, both the ways. Okay. Yeah. So अगर एक parent के point of view से, if we talk about from a parent point of view, as I said, they only care about what is right for you. Yeah. And for them जो कन्वेंशन है वो उसी के लिए वो जाएंगे. So मेरी एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स कि आप लोग जितना एफर्ट्स डालते हो आपके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में डालने के लिए, कि स्कूल कौन सी है, टीचर्स कौन से है, पास आउट कौन से है, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, स्कूल में कौन कौन सिखाने आ रहा है, वो टीचर पहले कहाँ पे सिखा रहा था, उनके स्टूडेंट्स के एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या एक्स स्टूडेंट्स आगे हार्वर्ड में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. इतनी जो मेहनत पेरेंट्स लेते हैं टू पुट देम इन प्राइमरी स्कूल, दे शुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स टू लर्न अबाउट एनिमेशन. फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ to actually take that step into this unknown field and actually study about it. And another reason I'm saying to study about it is because it is a very expensive field. Okay, so I was just going like to come about it yes, later part. Yeah. So yes. Animation is an expensive field just like any other field. Okay. मैंने खुद मेरे 10 साल के एजुकेशन में around 80 lakh spend की है on my education. Okay. So animation is not a hobby. Right. Animation is not something यार चलो BSc कर लो फिर एक एनिमेशन में जाते हैं कि एक डिग्री तो मिल गई. आप डॉक्टर करने से पहले, and tell your parents that,
ट्राई एंड कन्विंस देम कि आप डॉक्टर करने से पहले, इंजीनियरिंग करने से पहले कोई एक बेसिक डिग्री तो नहीं लोगे ना. राइट. एंड एनिमेशन में भी आपके पास डिप्लोमाज है, आपके पास डिग्रीज है, आपके पास मास्टर्स है, एंड अलोंग यस. आपके पास पोस्ट ग्रेड्स है, एंड अलोंग विद दिस आप एनिमेशन में पीएचडी भी कर सकते हो. वाओ. एंड अलोंग विद दिस आपको, आई मीन इफ यू वांट टू स्टडी देयर इज नो लिमिट टू राइट. व्हाट यू कैन डू राइट. इन दिस फील्ड, बिकॉज एज आई सेड मैंने खुद 10 साल पढ़ाई की है. बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स ने ये नहीं करना चाहिए अरे तू एक बीएससी इन इंजीनियरिंग कर ले और फिर तू आगे जा. मेरे पास अभी हमारे इंस्टीट्यूट में 4 स्टूडेंट्स हैं. One of them was in merchant navy for 7 years. The other one was mechanical engineer. The third one was in bank for 4 years. Uske baad, without any drawing background, they just had the passion to draw. They got into animation for 6 months. And now they are probably one of the best freshers we have hired. Wow. So this is a new option that younger generation has an open mind to. ठीक है, इसलिए फॉर अ यंगर जनरेशन इट इज इजियर फॉर देम टू पिक दिस प्रोफेशन. उनके लिए मुझे एक चीज बतानी है कि डू नॉट गेट इनटू दिस प्रोफेशन इफ यू डोंट हैव द पैशन फॉर दिस प्रोफेशन. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अमेजिंग एट ड्राइंग एवरीथिंग. जैसे आप जिनको डॉक्टर बनना है वो माँ के पेट से वो डॉक्टर नहीं बन के आते. हर एक चीज सीखनी पड़ती है. मैं जब एनिमेशन में गया मेरा ड्राइंग ठीक ठाक था, अभी भी ठीक ठाक है, पर प्रैक्टिस करते 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 अच्छा होता है. आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीखना पड़ता है. वैसे एनिमेशन इज अ फील्ड दैट इज सो, आई मीन दिस एग्जांपल माइट नॉट बी रेलेवेंट इतना ज्यादा, पर आप मैथ सीखने के बाद 2+2 हमेशा 4 होता है. पर आप 10 साल प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी 2+2 4 ही रहता है. पर ड्राइंग में अगर आप 10 साल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हाथ खराब हो जाएगा. So it is a very competitive field. It is a very passionate field, and unless and until you are willing to give your 100%, जैसे I said before, do not plan to get into this field. This field is only for those people who are passionate about this field of animation or passionate about drawing. Yeah. So I was अभी हम लोग skills और इसके बारे में बात कर ही रहे हैं. So let us discuss about what are the skills required. As in, as you अभी आपने जैसे बोला कि you should not be that much good in drawing. No, तो not at all. usually सिनेरियो या फिर पर्सपेक्टिव कैसे रहता है अगर एनिमेशन रहे या फिर डिजाइनिंग के कोई भी कोर्सेस रहे. सो ऐसे लगता है कि यहाँ पे यू शुड बी एक्सीलेंट इन डिजाइनिंग एंड ड्राइंग एंड एवरीथिंग, बट एज यू सेड, so the skills can be evolved or can be practiced, right? So what are these skills, which are the skills required to do the career in animation? आप आईआईटी के जाने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. आईएम जाने के लिए आप अलग अलग ये करते हो. आप एम्स जाने के लिए कितना सीखते हो. सिमिलरली एनिमेशन में जाने के लिए देयर आर मेनी प्री रिक्विजिट कोर्सेज दैट यू कैन टेक. ठीक है. सो इट इज ऑब्वियसली, जैसे मैं ड्राइंग पे इतना फोकस कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू बी फैंटास्टिक एट ड्राइंग, बिकॉज आप आज एक कोई चीज ड्रॉ करोगे कल आपको गंदी लगेगी. इसलिए कभी खुद को क्रिटिसाइज मत करना ड्राइंग में. इट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग चीज जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो. बट व्हाट यू कैन डू इज, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एनिमेशन के किसी भी फील्ड में जाओ, बिकॉज एनिमेशन में बहुत सारे फील्ड्स हैं. कम से कम 10 एक अलग अलग फील्ड्स हैं. जैसे डॉक्टर्स में देयर आर 100 different specialities, वैसे एनिमेशन में भी there are 8 to 10 different specialities. So it doesn't matter which specialty you go in, it is recommended that you do your BFA. Okay. अगर आप 12th के बाद अगर आप जा रहे हो तो it is recommended that you do Bachelor in Fine Arts. Okay. और find a course जिसमें you have an integration of some kind of drawing degree. बिकॉज आपको जो सीख के जाना है या आपको जो बचपन से, अगर जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो बहुत सारे लोग बचपन से, मेरा भाई 9th स्टैंडर्ड से डॉक्टर की तैयारी में लग गया था. आपको अगर आर्किटेक्चर बनना है, मेरे पापा आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मुझे 12th स्टैंडर्ड तक आर्किटेक्ट बना दिया था घर बैठे बैठे. आप जैसे छोटी छोटी तैयारी करने लगते हो ना, वैसे एनिमेशन के लिए स्कूल डेज में इंटरमीडिएट है, आपको एलिमेंट्री एग्जाम है, उसके बाद ड्रॉइंग क्लासेस है, एनिमेशन ड्रॉइंग फॉर एनिमेशन के क्लासेस है. एंड the most amazing
thing about your generation are the online classes. Hmm. जो आपको घर बैठे बैठे हफ्ते में 2 क्लासेस लेके आप कर सकते हैं. So just to quickly run through it, आप WhatsApp GIFs देखते हो, आप corporate videos देखते हो, आप educational videos देखते हो, या फिर architectural walkthroughs देखते हो. ये सारी चीजें आप टीवी सीरीज देखते हो, फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स हो गए, गेम्स हो गए, ये सारी चीजें, या फिर शाहरुख खान एक किसी रोबोट के ड्रेस्ड में रावण का रोल कर रहा है. दिस इज ऑल एनिमेशन. Hmm. ये सीखने के लिए एक बेस की जरूरत है. जैसे एमबीबीएस की जरूरत है, वैसे एक ड्राइंग डिग्री की जरूरत है. इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस फील्ड, make sure that you have drawing as a degree of drawing right after 12th, or look for a college that offers drawing as a part of the animation. I have done BFA in animation. मैंने BFA नहीं किया, मैंने BFA in animation किया when I went abroad. Okay. So look for courses that are more design or more drawing related. And one more thing is, when you're looking for courses now, look for a design degree. Do not look for BSc in animation. Okay. There are many degrees. There are 2 types of degrees out there जो proper certificates देते हैं, which is BSc in animation, which is more technical. जैसे आपका Mac हो गया, आपका Arena Multimedia हो गया. These are very technical, but and that knowledge is also important, but at the same time look for colleges that are giving design, are more towards design ki degree. Those are the colleges that will basically teach you the drawing ka core. Okay. So great. So can you please give 2 or 3 names of the institute, which are amazing in India and who are offering this particular course? So basically, now I know, and this is something that everyone in India talks about, ki boss mujhe degree chahiye. So I was going to ask you the same question. Exactly. That is it a degree? Do we need to have a degree course and post graduation, etc.? As long as you're doing the right course, degree doesn't matter. Okay. मुझे नहीं लगता पिछले 5-6 साल में while hiring people have looked at what degree they have done. We only take care of the class. We only look at the work they have done. Okay. Okay. I mean, I'm not legally allowed to say names, but there are very big institutions charging lakhs and lakhs of rupees. They teach nothing. And there are some very small institutions who jinke fees are less than 1/4 of these big institutions, and they are doing fabulous work. I mean, just to, I'm not promoting anything, but there is an institute called Arrhythmia Institute Degree College. That is a degree college in Indore. Okay. I visit them very often. I am also visiting faculty over there, and I at least go there once or twice a year to talk to their students. And one of probably the best animation schools in India right now. There are many degree courses, and as I said, always look for BSc in animation, which I will not recommend to do, but look for some design. So MIT in Pune has a design degree. Indore, Arrhythmia in Indore has a design degree. Whereas at Reg Institute, we only have 6-month courses. These are basic courses that we offer. We don't have any degrees. But then again, you are taught by people who are constantly working on international courses, on international projects. Okay. So, I mean, I can proudly say that in 6 months, people learn with us, working with us and on our production more than what they can do anywhere out there. But again, if you're looking for a degree course, there are many degree courses out there. The one that we have is a simple, like a math tuition that you go to, but with a 100% job guarantee and really good portfolio. So my next question is, when we say animation, पहले दिमाग में cartoons और ये आता है, right? Only animation is equal to cartoons. But then, are there any other verticals towards animation? Of course. So please elaborate on that. So their animation is an overall term Okay. for this field.
Okay. Okay, and there are different specialties in it. So when we watch movies, let's say Avengers, Right. या फिर in any Rohit Shetty movie there are a million bomb blast. Right. That is a vertical of animation which is called VFX. Okay. Okay. ठीक है, So so VFX is a part, is a, sub VFX is part a of part animation. of Oh, animation. okay. Similarly, 2D animation जैसे रामायण हो गया या फिर like राम मोहन का रामायण या फिर छोटा भीम, that is Hmm. 2D animation. 3D Hmm. animation is अभी latest एक 3D animated film Zootopia. Yes, yes. Okay. Zootopia आई थी, Yeah. या फिर Baby Boss, Kung Fu Panda. And by the way, all these movies are done in India, huh? Oh, 80%. really? So, Wow. Baby Wow. Boss, Shrek, Puss in Boots. There was one more, Bolt. There are many movies. Madagascar, Kung Fu Panda 3. They are Wow. all These are animated. big names in animation films. And these are only 3D films, okay? Okay. So, the next vertical is hyper realistic 3D, which is Okay. the latest Lion King that we saw. Okay. Which is, I mean, it feels like you're watching a National Geographic documentary, but it is animation. So now that is hyper realistic animation, where Jurassic Park, Jurassic World, like Mm-hmm. that is hyper realistic animation. That is 3D animation for live action feature films. That is one vertical. And again, 80% animation, most of the animation done in India Mm. for majority of the films. And along with many other, I mean, for such movies there are at least 20 30 studios, if not more, working on different scenes and different VFX animation and everything. So part of it is also done in India by Indian artists. Okay. Second, then another vertical is corporate videos, so educational videos like Byju's, then Okay. corporate videos like Paytm ke videos dekhte hain, free charge ke Huh. videos dekhte hain. That another vertical is ad films, Wow. where we have recently seen a complete cartoon ad film of some orange juice, of a juice product, Okay. and it's an ad film. So if you can look at it in a way where 2D, 3D and stop motion are like the three. Stop motion is आप जब puppets के साथ खेलते हो. So 2D, 3D and stop motion are the three main parts of animation. Mm. And corporate videos, VFX, educational videos, all these things can be done in 2D, can be done in 3D, and can be done in stop motion. Okay. So this is something that a lot of new coming population is a bit uneducated when it comes to animation. Is you need to figure out that if you're going into a particular course, Hmm. ask this thing. They might say they are teaching you animation, but they might teach What you ex- VFX. Yes, exactly. Exactly. So it is important for you to ask these questions and go through what they have done and be educated about this field before you get into any industry, or else, unfortunately, like most of the people, like they don't really expect, okay, मैंने तो ये expect नहीं किया था, ये कुछ और सीख रहा है. We were told animation, we are learning VFX, Right. which Okay. are two different, completely different verticals. Hmm. So always remember to ask all these questions. Wow. It's a very amazing input because like I said, myself मुझे भी यही लग रहा था कि animation बोले तो सिर्फ only and only cartoons, but all these VFX and video editing and everything comes in animation. This is new to me also. So I I mean, think yeah, the scope is very very vast in animation. हम स्नैपचैट पे सॉरी स्नैपचैट पे जो फिल्टर्स आते हैं, वो फिल्टर्स भी तो एनिमेशन ही है. Right, That is right, right, augmented reality. It is right. another vertical of animation. Okay. So, and Wow. if you don't know how to draw, let's say those stars and those stuff coming out, then you will not be good at it. That's why it doesn't matter what you do. Drawing is important. Hmm. Not being an amazing artist, but knowing the technical aspects of drawing is important. So जैसे आपने कहा ये जो सब वर्टिकल्स है, so ये सब वर्टिकल्स आर यूजुअली बीएफए और ये सब डिग्रीज 3 साल की रहती है, राइट? सो ये सब 3 to 4 वर्टिकल years. 3 to 4 years. सो ये सारे वर्टिकल्स आर द ये स्पेशलाइजेशन, आई मीन जो लास्ट ईयर रहता है स्पेशलाइजेशन का, उसमें ये सब प्रोवाइड कर किया जाता है, और
everything is taught नहीं, from the beginning. everything is taught from the beginning. Now it depends. Now, if you go to a college in which it is BFA in animation, Hmm. everything will be taught from the beginning, side by side. Drawing भी सिखा रहे, animation के technical चीजें भी सिखा रहे, and they will cover everything. Okay. But if you go for a specific BFA degree in JJ School of Arts, Hmm. उसमें आपको animation नहीं सिखाएंगे, उसमें आपका drawing skills, they will hone your drawing skills. Okay. Okay. So always go for the colleges that are providing a design degree. So उतना Okay. आपको research करना पड़ेगा. अच्छा, ओके. और ये जो स्पेशलाइजेशंस है, VFX एंड एनीथिंग एडिटिंग पार्ट, और सो दीज आर ऑल, आई मीन these are all taught simultaneously, as Of you course. said. Okay. Yes. Okay. Okay, great. So yeah, my next question is, when I am saying that I want to do my career in animation, what qualities I should have, Uh, as in both Passion. technical qualities as well as behavioral qualities? नहीं, टेक्निकल क्वालिटीज इट इज ओके इफ यू डोंट हैव एनी टेक्निकल क्वालिटीज, बिकॉज आप सीखने जा रहे हो, तो जो भी Okay. टेक्निकल क्वालिटीज है वो आप सीखोगे वहां जाके. Okay. ठीक है, बट देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आई रेकमेंड इज पैशन एंड पेशेंस. Okay. यू आर इन द Okay. फील्ड ऑफ एनिमेशन, यू आर इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग. Hmm. इट इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, एंड व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, अगर घर पे आपका झगड़ा होके आप काम पे जा रहे हो, आपको दिमाग क्लियर चाहिए होता है. Right. ठीक है, सो अनलाइक एनी अदर फील्ड, इस फील्ड में ऐसी चीजें डे टू डे लाइफ अफेक्ट्स अ लॉट, बिकॉज योर हेड नीड्स टू बी स्टेबल व्हेन यू आर वर्किंग, बिकॉज क्रिएटिविटी सारी इधर से निकलती है. Right. एंड पेशेंस, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड. आप लोगों को लगता है एनिमेशन इज एन एस्केप फ्रॉम स्टडीज, इट इज रॉन्ग. यू विल एंड अप इन अ वेरी मीडियोकर जॉब, मेकिंग वेरी मीडियोकर मनी, and being frustrated with what you're doing. Hmm. But if you take this thing seriously, if you have the patience, give it 5 years, give it 6 years, give it 7 years, this is probably one of the most promising fields you'll ever come across. So if there is anything I can recommend, is passion and patience. हम लोग ने इस टॉपिक को आई मीन टच किया ही है. देन व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड? Oh, amazing. Amazing as in, I don't see anything in this world that does not use animation. आपको आर्किटेक्चर में एनिमेशन यूज होता है वॉक थ्रूज के लिए. आजकल हमारे स्टूडियो में हम मेडिकल वीडियोस बना रहे हैं. आजकल मेडिकल वीडियोस, यानी डॉक्टर आजकल एनिमेटेड वीडियोस में दिखाते हैं कि आपका ये मसल ऐसे पुल हो गया है जो पहले नहीं दिखाया करता था. आप आज एवरी सिंगल इंजीनियरिंग में आज 3D में बिल्डिंग बनती है. आज इंजीनियरिंग में सारे स्पेसिफिकेशंस पहले मॉडल के साथ रेडी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम एनिमेशन, इन चीजों में भी एनिमेशन यूज होता है. एंड टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज कोविड. राइट, एग्जैक्टली. कोविड में 3 महीने हो गए हम घर पे बैठे हैं, हमारे फैमिलीज के साथ बैठे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं. एड्स, टेलीविजन, फिल्म, सब कुछ बंद हो गया. यानी जी मराठी में तो पुराने मूवीज, पुराने सीरियल्स दिखाने लग गए, बिकॉज उनका डेली शूटिंग नहीं हो रहा है. ऐसे वक्त पे the only thing that is working is animation. कोटक बैंक से लेके वो जूस के कंपनी तक सब लोग have moved towards animation already. आज तक जो क्लाइंट रेकमेंड करते थे कि we would like to come and visit your studio, from now on clients are not going to recommend that at least for the next 2 years. Yeah. So COVID के बाद animation एक ऐसी फील्ड है, along with IT, animation एक ऐसी फील्ड है जो 2 to 3 times और ज्यादा बढ़ गई है. यानी आई थिंक 2019 में जो जॉब्स का सर्वे किया होगा, मैं अभी आपको टेक्निकलिटीज या स्टैट्स में नहीं लेके जाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो पूरा सर्वे कम से कम 2 या 3 टाइम्स से बढ़ने वाला है. इतनी ज्यादा एनिमेशन की डिमांड बढ़ गई है, और उतने ही ज्यादा जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं. यानी दूसरे कंपनीज में जॉब्स जा रहे हैं, अपने कंपनी में पिछले 3 महीने में वी आर स्टिल हायरिंग. अभी के लिए तो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. सब खत्म होने के बाद दे विल जॉइन अस एट द स्टूडियो, बट दिस इज वन फील्ड दैट विल नॉट, just because of working from home thoda productivity affects, right, but right. this business is not affecting.
सो आई थिंक ये क्वेश्चन से अब मेरा जो अगला सवाल था दैट इज ऑलरेडी आंसर्ड, दैट इज बहुत सारे पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा अगर इस फील्ड में जाता है तो सिक्योर्ड है होगा या नहीं होगा, या फिर दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर्स अ लॉट फॉर एनी पेरेंट इफ सो आई थिंक आपका ये जो क्वेश्चन आई मीन आपने जो अभी आंसर दिया उससे ये भी एक मुझे आंसर मिल गया है. नहीं, but ग्रेट. and Shreya, even about financial stability, it is, you will make the same amount of money in this field that you will make being an architect or an engineer. यस, राइट राइट. मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज एक अलग फील्ड, बट आप आर्किटेक्ट बनो, आप आईटी में जाओ, आप इंजीनियर बनो, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप जितने ज्यादा स्किल्ड हो उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, राइट राइट. उतनी ज्यादा आपकी अच्छी सैलरी होगी. सो ऐसा नहीं है कि एनिमेशन में कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड प्रोफेशंस इट इज नॉट एज अमेजिंग. इट इज एट द सेम लेवल. द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इनटू इट or the amount of like other results that you get from the field. So it is exactly like any other field. ग्रेट. सो आई थिंक अभी अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे ऑडियंस में है तो उनको वो ये आई मीन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं दे व्हेन वी सजेस्ट योर चाइल्ड इज नॉट मेड फॉर typical IIT ka career, and whereas we suggest them that he might do well in like animation, product designing, graphic design. So that time ये जो parents का ना थोड़ा सा ऐसे मूड ऑफ हो जाता है. बट आई थिंक लाइक यू सेड कि एनिमेशन और ये सब जो करियर्स है दीज आर equally equipped like the other conventional career fields. So coming to the end, आप इतने सालों से इस फील्ड में हो तो आप ये जो अभी अपने साथ 6-7 पार्टिसिपेंट्स है तो और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एज एनिमेशन वन ऑफ देयर करियर ऑप्शंस, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? This is probably one of the best fields you guys can ever think of getting into. और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमें बचपन से ड्राइंग की आदत है. एंड व्हाट कैन बी बेटर देन एक्चुअली मेकिंग दैट हॉबी समथिंग दैट टू मेक मनी आउट ऑफ. मैंने वही किया. मैं अभी भी ड्रॉ करता हूँ. आई मीन ऑब्वियसली एनिमेशन में आपको और भी अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे it is exactly like any other field. You're making the same amount of money like any other field, and on top of that you've converted your hobby into your profession. So I would highly recommend that if you are planning on getting in this field, be serious about it, be passionate about it, and do everything humanly possible to convince your parents that this is the field that they should choose. And at the same time, do not consider this as an escape from यार मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं एनिमेशन करता हूँ, ड्राइंग ही तो करना है. If you don't have that approach and if you give it the same importance that you give any other profession, I think this is going to be a dream come true field for everyone.